Hi friends, how are you doing today? I'm your Ramandeep Singh, back on your favorite channel of coaching, where I help you in preparing for the IELTS exam. In this video, I'm going to share one of the most important cue cards of session 2020, and let's quickly have a look at the new cue card. The cue card is talk about a thing that you purchased but find it difficult to use it first. And the cues can be what it was, when and where you purchased it, what did you find difficult about using it, and how did you learn how to use it. ऑप्शंस इसके लिए बहुत सारे हैं, बट यूजुअली आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ऐसी कुछ ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ रहती है. रेगुलरली अपडेट्स होते रहते हैं और नए फीचर्स को समझने में दिक्कत आ जाती है. यू कैन इवन टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल अलेक्सा, कि अलेक्सा मैंने परचेज किया लेकिन मेरे को समझ नहीं आया वो उसको मैंने ऑपरेट कैसे करना है. बट मेनी ऑफ यू मे नॉट बी फेमिलियर कि हाउ अलेक्सा वर्क एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज. और लेकिन आप में से जिसको भी पता है कि अलेक्सा क्या है, या आपने उसको यूज किया है या आप उसको यूज करते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. बात करते हैं आज के क्यू कार्ड की. मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आइडिया लिया है. आप में से कईयों को अजीब भी लग सकता है, बट रियली डजंट मैटर. हमें यहाँ पर सैंपल आंसर प्रेजेंट करना है. एग्जामिनर के सामने अपनी फ्लुएंसी प्रेजेंट करनी है इंग्लिश में, जिसके नंबर मिलेंगे, ना कि आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज की. यहाँ पर बहुत सारे एप्पल यूजर हो सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर जो आंसर है उसके लिए मैंने चूज किया है एप्पल मोबाइल फोन. इवन आप एप्पल लैपटॉप की बात कर सकते हो दैट यू रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, क्योंकि आपके एक अंकल हैं जो फॉरेन में रहते हैं, तो ये हमारे अंकल कई क्यू कार्ड्स में आ जाते हैं वैसे. एनीवे, तो यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है ये गिफ्ट. सिंस दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप एक एप्पल प्रोडक्ट यूज करते, जिसकी वजह से इनिशियली यू फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो एप्पल मोबाइल्स को यूज करने के लिए हमें एक आईडी बनाना पड़ता है. तो आप कह सकते हो कि उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी. एंड देन उसमें एक बहुत स्मार्ट सेल्फी कैमरा था, एडिशनल कैमरा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसमें, बट आई वाज रियली अनअवेयर कि इसको यूज कैसे करना है. प्रॉपर आईडी ना बन पाने की वजह से आई वाज नॉट इवन एबल टू यूज इट प्रॉपरली. तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे हाउ टू एक्चुअली लर्न हाउ टू यूज इट. तो आपने कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया. चाहे आपने ये मोबाइल इंडिया से नहीं भी लिया था, फिर भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ने आपको बहुत ही नाइसली हैंडल किया, बहुत ही पेशेंटली आपको उन्होंने समझाया. इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ एक यूजर मैनुअल है, साथ साथ आपने उसमें भी इंफॉर्मेशन को चेक किया, एंड देन यू गॉट टू नो हाउ टू यूज इट. थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए हम एक चीज और ऐड करेंगे. सिंस इस पे मैं अपने अदर स्मार्ट डिवाइसेस एट होम उनको भी कनेक्ट कर सकता था. फॉर एग्जांपल, आजकल स्मार्ट एलईडीज होते हैं, देन म्यूजिक सिस्टम्स रहते हैं, सो ऑल दीज कुड बी कनेक्टेड टुगेदर. तो आपको इसमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही थी. नहीं आती, मुझे पता है, आप बहुत स्मार्ट हो, यू रियली डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट हमें सैंपल बनाना है. बी अवेयर ऑफ दिस थिंग. और यहाँ पर आपका जो एक फ्रेंड जो काफी एक टेक सेवी है, टेक सेवी मतलब जिसको टेक्नोलॉजी की काफी समझ रहती है, आपने उसकी हेल्प ली, तो उसने आपको समझाया कि इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं. एंड विद इन फ्यू डेज और अ वीक टाइम यू वर्क कॉन्फिडेंटली यूजिंग दिस डिवाइस. लेकिन ये वही डिवाइस है जिसको इनिशियली यूज करने में आपको दिक्कत आई. इफ यू रियली लाइक द आइडिया, कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, do it now. Press the like button if you like my videos, and at the end of this video, please leave the comment that which next cue card you would like me to prepare for you. IELTS Speaking Booster, the book that is available on IELTS Coaching, written by me, contain all the sample answer of the latest cue cards. You can purchase it. It is still available at discounted price, and avail the opportunity. So let's start today's sample answer. Well, these days we often buy latest technological gadgets, and sometimes it takes us little time to get familiar with how they work. Something similar happened to me when I received my first iPhone. Actually, it was my long time wish or a dream to have a mobile phone of Apple brand, and finally it got fulfilled
when on my last birthday, my uncle who lives in America sent me the latest iPhone as a birthday gift. I was extremely delighted to receive such a wonderful and expensive gift, and I was desperate and eager to use it. Since I had been using Android phones all the time, and when I tried to use the Apple phone, I faced lots of difficulties. I could not even make an ID on this phone. Because of that, I was not able to use it properly. I was not able to download any application. Download IELTS coaching application. The logo looks like something like this. Enter your details, your telephone number and OTP number that you receive. This is the home screen. Click on IELTS Speaking Booster. Click on the book that you want to buy. It is logged, so you have to pay. The discounted price is $249. Enter your card details. At the same time, this mobile was having an additional artificially intelligent camera that was of extremely high quality, but I was not even able to operate it. I decided to contact customer care for some help. Even though I had not purchased this mobile from India, still the customer care executive was really polite and helpful, and he patiently guided me and introduced different features of this mobile phone. He even told me that there is a user manual that I can follow for more details. Now, I was comfortably using this mobile, but still having some problem with the connectivity of different smart devices at my home. For example, my LED and sound system. Luckily, one of my friends, Simran, is a tech savvy, so I contacted him and shared my problem, and he sorted out my problems in a fraction of a minute. And now I regularly use this mobile phone and make use of its different features. However, initially I had a great trouble in understanding how it works. And that's it. अगर आपको as I said कुछ भी और रखना है, you are most welcome, but make sure you have few things to talk about to develop your length to around 2 minutes time. Any time between 1 and 2 minutes time is just perfect. If you can speak more, and if the examiner stops you that the time is over, that is 2 minutes time is over, what can be better than that? That's pretty much all from my side today, and I will catch you very shortly in my next video. Take care.